Hey guys, this is Sal and welcome to Diwali special episode of Technical Saturday series। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि what are the different stock picks which we can focus more on for next few weeks as well as few months, because from this particular video onwards I'm gonna try to speak in Hindi plus English, because ये मैंने कुछ हफ्तों से और इवन कुछ महीनों से ये नोटिस किया है कि when I'm speaking in Hindi plus English we are reaching out to more and more audience। तो आई ट्राई माई बेस्ट ताकि मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में सारी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं। एंड दिस इज आवर फर्स्ट एवर वीडियो इन हिंदी प्लस इंग्लिश एंड आई ट्राई माई बेस्ट। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हो जाए, मेक श्योर यू फॉरगिव मी इन एडवांस, बिकॉज आई एम नॉट टू कंफर्टेबल टू स्पीक हिंदी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट स्टिल to fulfill my mission I'm going to do whatever it takes, and I hope that all the members are absolutely comfortable with this as well। And first of all, wishing you all a very happy Diwali and a new year, and I wish you all that your next year bring you lots of joy, happiness, money, wealth, and most importantly, good health as well। And in this particular video, we are going to look up at what are going to be the Diwali picks for next few months। And इस particular video में I am also gonna give you some picks जो कि swing trade के basis पे होंगे। काफी सारे stocks ऐसे भी होंगे जो कि mid term basis पे होंगे। तो make sure इस particular video को आप अच्छे से and make sure you full notes, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। और सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि करंट मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है। सो राइट नाउ ऑन स्क्रीन वी हैव निफ्टी 50 चार्ट, जिसमें पहले हम पूरा लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, दैट इज लाइक टॉप डाउन अप्रोच जो हम हर वीकली मास्टरमाइंड में करते हैं। सो राइट नाउ ऑन निफ्टी 50 वी हैव मंथली आरएसआई अबव 60, यानी कि ये एक सिग्नल है विच इज वेरी बुलिश। और राइट नाउ लेट मी गिव यू वन मोर सिंपल नगेट हियर। जब कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक जब 60 का ब्रेकआउट करता है, यानी कि इट इज मेंशनिंग आई एम बुलिश। बट जब वो 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इट इज टेकिंग 60 सपोर्ट, देन इट इज मेंशनिंग दैट आई एम वेरी बुलिश। राइट, सो अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन है निफ्टी 50 की, इट इज टेकिंग प्रॉपर 60 सपोर्ट, यानी कि इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश। यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी 50 एंड इवन ओवरऑल इंडियन मार्केट इज वेरी गुड। नेक्स्ट कम्स वीकली वीकली टाइम फ्रेम, जहां पे हमने पिछले 2 हफ्ते के वीकली मास्टरमाइंड में भी ये मेंशन किया था कि यहाँ पे सीआईपी है, दैट इज चेंज इन पोलैरिटी एरिया। और साथ ही साथ फिलहाल के लिए वीकली टर्म ट्रेंड में भी आरएसआई बिटवीन 40-60 है। बट द बेस्ट पार्ट इज वहां पे उसने सीआईपी का प्रॉपर यूसेज करके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, यानी कि वीकली टर्म ट्रेंड भी फिलहाल पैनिकनेस से बाहर है। देन कम्स डेली टाइम फ्रेम, जो कि 40 के नीचे भी सस्टेन कर चुका है, बट एग्जैक्टली जो सीआईपी का एरिया था वहां से उसने कंफर्मेशन दिया। एंड इवन ड्यूरिंग आवर लाइव ट्रेडिंग चैलेंज मैंने ये चीज भी मेंशन करी थी यहाँ पे कि वी हैव प्रॉपर रेंज शिफ्ट। ऑल्दो उसने 40 सपोर्ट एग्जैक्टली नहीं लिया था, बट वी हैव बुलिश रेंज शिफ्ट। और साथ ही साथ पिछले एक हफ्ते में हमने पूरा प्रॉपर मूव ऑन द अपर साइड, साथ ही साथ इट्स कंसोलिडेटिंग विद मूविंग एवरेज। ओवरऑल पर्सपेक्टिव फिलहाल तो बुलिश लग रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर प्रॉपर 60 ब्रेकआउट, बिकॉज जब डेली टाइम फ्रेम पे 60 ब्रेकआउट हो जाएगा, द फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी ऑन निफ्टी 50, आर फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 19,850, और साथ ही साथ नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो कि ऑल टाइम हाई जोन का है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी जो नवंबर और दिसंबर का मंथ है, वी कैन सी प्रॉपर लाइक फिलहाल तो बेस बन चुका है, बट वी कैन सी प्रॉपर मोमेंटम ऑन द अपर साइड। और ये भी हो सकता है कि बाय एंड ऑफ दिसंबर मंथ और होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर जो बिगिनिंग होगा जनवरी मंथ, तब तक हमें ऑल टाइम हाई जोन भी देखने को मिल सकता है। And if we look up at Bank Nifty chart is slightly, you can consider dicey as compared to Nifty 50. And let's have a look at the overall top-down approach of it. So monthly chart, Bank Nifty का monthly chart थोड़ा सा 60 के नीचे आ चुका है, but still right now it is emerging out. As you can see, RSI 60.42, यानी कि वो 60 के ऊपर sustain कर रहा है, so that is not bad। Then comes weekly time frame, जिसने proper you can consider almost 40 support, and this is also kind of system for trade as well, जो कि हमारी community में है, but still हम लोग इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, वी कैन गो फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एज वेल। बट एज ऑफ नाउ 40 सपोर्ट लिया है, और फिलहाल बिटवीन 40-60 है, एंड सीआईपी वाला कोई एरिया नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी। बट इफ वी लुक अप एट डेली चार्ट, यानी कि वहां पे उसने प्रॉपरली मूविंग एवरेज ब्रेकआउट कर दिया है, एंड इवन आरएसआई इज एमर्जिंग आउट। एज यू कैन सी उसका फेस ऊपर के साइड ही है, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने निफ्टी का मेंशन किया, दैट बाय एंड ऑफ दिसंबर मंथ या फिर मैक्सिमम जनवरी मंथ के बिगिनिंग में वी कैन सी ऑल टाइम हाई जोन। तो सिमिलर कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर बैंक निफ्टी एज वेल, जहां पे पहले हमारा रेजिस्टेंस होगा 44,700, वहां पे आके थोड़ा अटक सकता है, बट ऑल टाइम हाई जोन के आसपास आके वंस इट ब्रेक्स आउट, वहां पे अगर बुल्स ने टेक चार्ज कर लिया, then it would be very good thing for us, that is like all time high zone is almost around 46,200।
तो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ दैट एरिया, वहां से हमारे पास गुड, यू कैन कंसिडर काफी अच्छी स्पेस है इन ऑर्डर टू हैव ऑल टाइम हाई, एंड बुल्स कैन आल्सो टेक चार्ज। एंड इवन बैंकिंग सेक्टर में भी पीएसयू बैंक जो है, लाइक पीएसयू सेक्टर्स एंड ऑल, PSU stocks जो हैं, those are performing good, so you can definitely focus on those stocks rather than all those uh, which are involved in Bank Nifty. उसके अलावा let's have a look at stock specific जो कि खास you can consider which are like Diwali picks. And right now let me add volume as well, because in our community we use this 7 step process, that is price, pattern, volume, momentum, volatility, time and sentiment. Out of which यहाँ पे हमारे पास price action है, price is there, pattern is candlestick pattern, price pattern, volume हमारे पास है, then comes momentum जिसके लिए हम RSI यूज कर रहे हैं, then comes volatility, और बाकी time and sentiment. As of now we are having Diwali period, so this is also somewhere जहाँ पे during the end of the year we see volatility either on the upside or on the downside. और फिलहाल के लिए potential तो लग रहा है कि we can see very good uptrend and all, but still we will have proper risk management at its place. And right now जो कोई भी stocks मैं mention करूंगा, make sure you do your own analysis, and whatever stocks I'm gonna mention, these are the stocks which we are tracking, which I am tracking, and वी आर ट्रैकिंग इन द सेंस हमारी कम्युनिटी जो है, दी अचीवर्स क्लब, हर कोई यही स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं, दे आर गोना ऐड देयर पोजीशन वंस वी गेट प्रॉपर कंफर्मेशन आफ्टर मुहूर्त ट्रेडिंग एंड इवन ऑन मंडे। और यही स्टॉक्स होंगे जिसमें हमारा पर्सपेक्टिव फिलहाल के लिए बुलिश है बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट, यू कैन कंसिडर मार्केट कंफर्मेशन एज वेल। और अगर हम ये स्टॉक स्पेसिफिक का टॉप डाउन अप्रोच भी करें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो एनटीपीसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस स्टॉक का ये करें टॉप डाउन अप्रोच, देन यू विल बी एबल टू सी कि मंथली चार्ट पे, एज यू कैन सी मंथली चार्ट पे सिंस 2008, आई रिमेंबर 2008 का जो ये कप है, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज इन 2023, ऑलमोस्ट 15 साल का ये कप है विच हैज ब्रेकन आउट सक्सेसफुली, विच इज अ वेरी गुड साइन। Volume is also good. RSI is also sustaining above 60. Squeeze open on the upside, walk off the band. So long-term perspective is looking good. Weekly term trend, that is like a medium term trend, that is weekly time frame. यहाँ पे RSI is also sustaining above 60, above moving average. So that is also a very good sign. And then comes daily time frame, which बीच में इसने you can consider since the month of October proper consolidation zone में था. So once it breaks out of RSI 60 and once it opens the squeeze on the upper side, we can go for proper system 3 entry. And if you are completely unaware about what system 3 is all about, then below this particular video, I'm going to give you a special surprise. Make sure you take maximum benefit of that particular secret surprise which I'm mentioning in the form of stock trading secrets itself. So जिसमें you'll be able to understand about what is system 3 in depth, and that's what it is all about. So this is, you can consider a special Diwali gift from my side. So right now we have RSI 60 breakout. Like once it breaks out of 60, volume भी you can consider as of now not that good. बट जब वॉल्यूम भी सपोर्ट करने लगेगा, प्राइस एक्शन इज ऑलरेडी सपोर्टिंग बिकॉज फ्राइडे को उसने प्रॉपर कंफर्मेशन दिया है जिसमें इट हैज ऑल्सो ब्रेकन आउट ऑफ मूविंग एवरेज, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो यहाँ पे हम अर्ली एंट्री कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिस्टम 3, विच वुड बी वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सो दिस इज लाइक अ वन स्टॉक विच इज बेस्ड ऑन कप पैटर्न स्ट्रेटेजी, बट यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद जो हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बेसिस पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। So that's what it is all about. Then comes second stock. ये भी you can consider this is also the stock which we are actually executing based on cup pattern strategy itself. So as you can see on monthly chart, जैसे हमारे पास NTPC का confirmation था, similar is for DLF also. The second stock is DLF as a Diwali pick which I am giving. So this is the stock which is formed since almost 13 and a half years, जहाँ पे previous जो resistance था which was almost around 525, almost around that zone. तो यहाँ से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, एंड इवन इन फ्यू वीडियोस बैक वीकली मास्टरमाइंड के वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि कप पैटर्न स्ट्रेटजी कैसे होती है। तो रिजोल्यूशन पॉइंट के 4% ऊपर, यानी कि जो हमारा एरिया था 525, उसके 4% अप हमारा एंट्री प्राइस रहेगा, उसके 2% डाउन यानी कि जो रिजोल्यूशन पॉइंट है उसके 2% नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि हमारा रिस्क रहेगा 6% फॉर द पोटेंशियल 10%, 20% एंड 30% रिवॉर्ड्स इन यू कैन कंसिडर फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स टाइम। बिकॉज हमें इतना नहीं पता है कि लाइक वी डोंट नो एग्जैक्टली कि जो भी हमने टारगेट रखा है वो टारगेट कब तक रीच आउट होगा और वो टारगेट रीच आउट होगा भी या नहीं। बट द ओनली थिंग विच वी नो इन द मार्केट इज हाउ मच रिस्क विच वी कैन टेक, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने रिस्क भी एब्सोल्युटली आपको क्लियर कर दिया है कि जो 6% होगा एंट्री प्राइस से 6% डाउन, यानी कि रेजोल्यूशन पॉइंट से 2% नीचे, दैट्स व्हाट आर initial risk is going to be like, and our potential target can be 10%, 20% and 30%.
So that's what this thing is all about. Monthlies RSI above 60, squeeze open on the upside, walk off the band. And then comes daily, weekly time frame, that is medium term trend, which is also looking good. Volume bhi kafi acha hai since last 2 weeks, and it is already sustaining above moving average and above RSI 60, which is a very good sign. And then comes daily time frame, because this is also the sector which is in realty sector, or in previous weekly mastermind I mentioned that realty sector is performing really good. So right now this particular stock is also performing well. So DLF can be the second stock pick for Diwali for this particular year. And then comes the third stock pick, and the last one which I'm mentioning in the form of Diwali pick for this particular video is NMDC, or ये stock be specifically based on cup pattern strategy itself. And its a cup is almost, you can consider the resolution point was around 129. Already इस cup ने breakout दे दिया है, but still we can have again like a low risk high reward opportunity, because यहाँ पे RSI is already sustaining above 60. Volume is also good in terms of demand, and green candles already है. Then comes weekly time frame. After proper consolidation, squeeze has opened, and let me give you one more nugget here, that longer the squeeze and tighter the squeeze, stronger the breakout. Longer the squeeze, stronger the breakout. That is what the main function of Bollinger Bands is all about. And right now, it has already given the momentum from 114 till almost, you can consider, till 168 within a span of few weeks. And maybe we can see further more momentum into this particular stock with very low risk high reward opportunity. Although यहाँ पे हम system 5 भी execute कर सकते हैं, but primarily we are focusing upon the stock जिस पे हम you can consider जिस पे हमारा time investment कम है. Although we are investing money and we are doing back testing and all, but हम whatever profession we are following, हम जो कोई भी profession follow कर रहे हैं, whether you are doing a job, you are an entrepreneur, whether you are a business owner, you are a teacher, whatever you are doing, if even if you are a freelancer, you can still do the analysis of these particular stocks, and you can execute with very low risk high reward opportunities. And right now we are having very low risk high reward opportunity in terms of NMDC as well, जहाँ पे we can go with very low risk high reward opportunity, जहाँ पे हमारा candle high जो बनेगा, maybe during Muhurat special trading you can execute this particular trade, or else Monday ko bhi you can execute. Or even if you're watching this particular you can consider this particular analysis in future, so you can get absolute clarity कि हम किस basis पे trade ले रहे हैं. And even if that particular stock is giving low risk high reward opportunities in future also, then also you can execute the trade at that point of time. So right now we are having a daily time frame also जिसमें squeeze open हुआ है, RSI is already sustaining above 60, volume is also good. तो यहाँ पे all the three time frames are confirming. So ultimately we can go for hourly and 15 minutes time frame, जिसके basis पे हम low risk high reward opportunities के basis पे trade execute कर सकते हैं. And right now we have like almost the prices around 160, 160, yeah, 168. So we can go for 8 to 10 rupees stop loss on the downside, जो कि moving average का support रहेगा. And once it moves forward on the upper side, जो भी मैंने तीन stocks बताए, that is NTPC, DLF and NMDC, ये जो तीन stocks हैं, moving average का हम stop loss लेके we can go for very low risk high reward opportunity, and we can have potential reward of 1:3, 1:5 as well. And there is also possibility जो कि हम जो भी risk ले रहे हैं, maybe we can get 1:7, 1:10 risk reward ratio as well. और इसका follow up I am also gonna definitely give in weekly mastermind session as well. So make sure if you're watching this particular video for the very first time, make sure you subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook page as well, ताकि आप जो भी weekly mastermind sessions आते रहेंगे, because वीकली मास्टरमाइंड सेशन हर संडे को होता है ऑन, यू कैन कंसिडर ऑन बोथ द चैनल्स, दैट इज फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल, जहाँ पे 5 PM को हमारा यूट्यूब वीडियो अपलोड हो जाता है. तो इवन आई एम गोना गिव द फॉलो अप ऑफ ऑल दीज थ्री स्टॉक्स, ताकि इन फ्यूचर जो कुछ भी मोमेंटम आ रहा है इनटू दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स, दैट इज DLF, NTPC एंड NMDC, आई एम गोइंग टू गिव दैट पर्टिकुलर follow up into weekly mastermind session itself. So make sure you follow us on YouTube channel, like follow us on Facebook page and subscribe to our YouTube channel. और साथ ही साथ if you like this particular video, make sure you hit that particular like button and subscribe to our YouTube channel. And once again, thank you so much for watching this particular video till the end, and I hope that you are absolutely comfortable with my Hindi plus English, because this is for the very first time which I am doing this publicly. And I hope that all the members have got immense value and clarity. And make sure you share this particular video with your friends and loved ones, ताकि वो लोग भी clear हो सकें that what can be the stock specific for next few weeks and few months. And these are completely for educational purpose, as I've already mentioned. These are not any suggestions. You can analyze on your own. You can do proper analysis on your own, और साथ ही साथ you can have proper risk management, because risk management is the only thing which we can control. The reward part we can't control at all, because even I don't know
कि टारगेट कहाँ तक पहुंच सकता है. मे बी वी कैन गेट 10%, 20% और वहां से नीचे आ जाए. मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वो 30% से ऊपर जाके 40-50% रिटर्न भी दे सकता है. वी डोंट नो अबाउट इट, बट द ओनली थिंग विच वी नो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग इज जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा, दैट इज व्हाट वी नो. Right, so I hope that all the members have got immense value and clarity from this particular video as well. And आशा करता हूँ you are comfortable with Hindi plus English, and in future I'll bring on many more videos based on this particular thing. And as I've already mentioned, इसका follow up आपको weekly mastermind session में मिलता रहेगा. So make sure you keep watching our weekly mastermind series as well, and I'll see you tomorrow with weekly mastermind session. Till then, wishing you all a very happy Diwali, and wishing you all a very happy New Year as well. And tomorrow we have Muhurat special trading as well. That is from 6:15 till 7:15. So also, I'm also, you can consider excited enough for what happens after Muhurat trading and what happens after Diwali. And hopefully things are going good, so we can expect furthermore momentum on the upside itself. So looking forward to see you in next videos. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.